हेलो दोस्तों, वेलकम टू Forexraja, योर चैनल फॉर USDINR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। दोस्तों, मैं अब हम ट्रेड कर रहे हैं 83 के ऊपर। स्पॉट ने फ्राइडे और मंडे के बीच में 83 को कॉन्कर कर लिया फाइनली। बहुत एक साल के बाद स्पॉट ने 83 को तोड़ दिया था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैं पहले जाऊंगा अपने वन डे के चार्ट पे। ये दोस्तों देख रहे हैं, ये वन डे का चार्ट, और यही चार्ट जो भी मेरा एनालिसिस 2-3 महीने से देख रहे हैं उनको क्लियरली समझ में आएगा जो बात मैं बोलना चाहता था। मैंने अपने मंडे या फ्राइडे के एनालिसिस में भी क्लियरली बोला था कि भाई बहुत बार ब्रेक होने की अटेम्प्ट हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार अटेम्प्ट हो चुका है। कभी ना कभी तो तोड़ेगा 7 बार के बार। ये 8वें बार में ब्रेकआउट हो चुका है वन डे के चार्ट पे। अब जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों, वेनेवर जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, लॉन्ग कंसोल, एक साल का कंसोलिडेशन है ये। एक साल के कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, तो ये ब्रेकआउट एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाता है। उसको बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड टेरिटरी क्या होता है? ये होता है अनचार्टेड टेरिटरी। एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे हाई मारा था एक साल पहले यहाँ पे 83.21 के पास, ठीक है। उसके बाद एक साल पूरा इसने हाई ही नहीं मारा। अब ये क्या किया है, 81.21, मतलब ये जो सबसे हाई था इसको भी तोड़ के ऊपर चला गया। मतलब ये जोन जो है ये कहाँ तक जाएगा अभी किसी को नहीं पता। अब कितना ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता। उसे बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। मतलब चार्ट पे भी नहीं पता चलेगा अभी कि ये कहाँ तक जाएगा। उसे बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, मेरा टारगेट था, मेरा एनालिसिस का, जो भी मेरे रेगुलर फ्रेंड्स या ग्रुप जो भी मेरे ग्रुप में देखते हैं, मैंने अपना पर्सनल टारगेट दिया था कि अगर 83 ब्रेक होगा तो स्पॉट 83.41 को जाएगा बोल के। आज का जो हाई है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 83.4 के पास था, और उसके बाद एक शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आया। कुछ यूएस का डेटा आया है बट वो डेटा पॉजिटिव ही है। बट एक और न्यूज़ आया था दोस्तों कि आज इंडिया ने पहली बार यूएई के साथ एक ऑयल डील किया है, जिसमें पैसा जो दिया गया है वो डॉलर में नहीं दिया पर वो रुपी में दिया गया है। ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ है जहां पे इंडियन रुपी को यूज़ किया है करेंसी में पेमेंट करने के लिए, ऑयल के लिए। ठीक है, तो ये किया इसलिए गया है ताकि डॉलर को जितना कम यूज़ करे और रुपी का वैल्यू बढ़ाने के लिए या रुपी के अप्रिसिएशन के लिए ये एक ट्रांजैक्शन किया हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें कल मार्केट में पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि कल क्या छुट्टी है कि मार्केट खुलेगा। बहुत सारे जगह पे ये लिखा है कि August 15 इज़ अ हॉलीडे। investing.com ऐप जहाँ से मैं अपना व्यूज़ देता हूँ, उसमें लिखा है 15 अगस्त हॉलीडे है, 16 अगस्त सेटलमेंट डे है, ट्रेडिंग रहेगा बोल के उन्होंने भी बोला है, हॉलीडे नहीं है ऐसा बोला है यहाँ पे। इसलिए मैं ये एनालिसिस इतना लेट में पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो मैं अपना 1 आवर चार्ट पे जाता हूँ दोस्तों, और आपको आज तो थोड़ा बहुत आज आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए हमें थोड़ा रेंज लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ थोड़ा मेरे साथ संयम बरतें, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज लेने वाला हूँ मैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा 1 आवर चार्ट। तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा दोस्तों वो आएगा 83.21। ठीक है, अगर स्पॉट 83.21 के ऊपर रहता है दोस्तों तो बाई साइड पे रहने का अच्छा चांस है, क्योंकि 83.21 के ऊपर स्पॉट जाएगा यहाँ पे जहाँ अभी वो ट्रेड कर रहा है 83.32।
और अगर 83.32 के ऊपर ही रहा दोस्तों, तो आपका अगला लेवल ऊपर की तरफ आएगा 83.41, जो मेरा लेवल था, जो मैंने सोचा था वो आएगा 83.41 के ऊपर दोस्तों। अगर ट्रेड करता रहा तो स्पॉट डायरेक्टली जा सकता है 83.54, और 83.54 के ऊपर दोस्तों ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, इतना भी मत सोचो, बट 83.54 के ऊपर अगर सरवाइव किया तो स्पॉट डायरेक्टली जा सकता है 83.76। ये अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, बट फिर भी मैं इसीलिए लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल लेवल्स, हिस्टोरिकल नंबर्स, मतलब जब स्पॉट 80 टू 81 मूव हुआ तो कैसे मूव हुआ, 81 टू 82 जब मूव हुआ तो कहाँ मूव हुआ, 82 से 83 मूव हुआ तो कहाँ मूव हुआ, वो डेटा के बेसिस पे मैं ये नंबर्स दे रहा हूँ। ये नंबर सही भी नहीं हो सकते, बट ये क्या ये सही हो सकते हैं, उसे टेस्ट करने के लिए मैं कल परसों मार्केट देखूंगा। आप भी ये नोट डाउन कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर स्पॉट 82.21 के नीचे रहता है दोस्तों, ओके, कल के डेट में कुछ डेटा आता है समझ लीजिए, या कुछ आता है जिसकी वजह से 83.21 के नीचे रहता है दोस्तों, तो स्पॉट का पहला लेवल जो टेस्ट करेगा वो है 83.11, सॉरी 83.11 दोस्तों। हाँ, करेक्ट करेक्ट मार्क किया है मैंने, 83.11 पे टेस्ट करेगा स्पॉट। 83.11 से नीचे जाएगा दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 83.08, और 83.08 के भी नीचे चला गया दोस्तों तो आएगा 83.034। ठीक है, ये इतना नीचे आ सकता है, बट 83.034 के पास फिर से बाइंग आने की चांसेस है दोस्तों, क्योंकि 83 के नीचे जाने का चांसेस अभी थोड़ा कम है, बहुत ही कम है, समझ लो। जो भी अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, मैं हमेशा पुट लेता रहूँगा, मैं हमेशा डाउन लेता रहूँगा, प्लीज़ ऐसे मत सोचो। ट्रेडिंग में या चाहे रुपी स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों अच्छे होते हैं रुपी के लिए। अगर रुपी स्ट्रांग होता है तो इंपोर्ट के लिए अच्छा होता है, रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होता है दोस्तों। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी, एक वीक रुपी होता है तो उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, या करेंसी को फ़ायदा होता है। तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ट्रेडिंग के लिए अगले दिन तैयार रहेंगे, या एटलीस्ट आपको लेवल्स तो पता रहेगा कि क्या लेवल्स पे मैं क्या ट्रेड लूँ बोल के, राइट। और आपको अगर मेरे साथ साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, फ्री लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं छोटा मोटा अपडेट देता रहता हूँ ट्रेडिंग आवर्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ लेट्स डू दी एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Let me go to the 1 day chart friends, because it is it is a historic movement on Indian rupee has broken the 83 mark, and it was very clear that 83 will be broken. Still many people thought this time also it will not be broken and took a lot of sell calls at around 83, but now it is getting really dangerous, right? And if you can see the trend friends, if I'll go back to the the 1 day chart, and I'll show you. If I go here, you can see here friends the trends which has happened day before, that is from 12th. If I take from 12th, okay, and if you want to see the breakout over here, you can see here on 12th of August almost 83 was touched multiple times. By 13th, that is on the 12th evening, we all 12th 13th by 13th we had crossed 83, and on 14th we got that big move, big breakout. And if you see my Monday's analysis which I had posted for Sunday, on Sunday I had clearly told that if spot is above 83.08, if spot goes above 83.08, it will give a very good move. So spot did give a very big move, all right. And with this move, spot trading above 83.21, it confirmed that it is now in an uncharted territory. Now many of you will ask, what is this uncharted territory meaning?
Okay, let me explain you what is uncharted territory. So for that uncharted territory, let me go here. Okay, this is the 1 day chart. Okay, 1 day chart. This is the 1 day chart is from last year, last year to today. It's around 8 months 1 day chart. Okay, now if you see the first time when spot went above 83, the high that was made was 83.21. Okay, after that every time it never made that high, it just failed. Every time it started falling near 83, falling 7 times it failed conquering 83, but now on the 8th attempt it conquered. Now this 83.21 is broken, and hence it is now above 83.21, and this territory where it has never gone becomes the uncharted territory. That means spot can go anywhere now. If it keeps going up, it will go up, friends. So you have to be ready for it. All right, a lot of people will always think that no, spot will come down, spot will come down. Don't go with your gut feel, or don't say that someone who feels that rupee is going to weaken, a weaker rupee, someone who is buying or bullish about rupee, non bullish about or bullish about dollar, is not a deshbakt and all. Don't think like that, friends, because a weaker rupee is sometimes good for our economy, and a stronger rupee is also good for the economy. It is good in both the scenarios, but it depends on at what stage of the economy is the rupee weakening or is the rupee strengthening. That is what matters. And today, friends, there is today, if you see, the high that spot had hit was almost around 83.39 or 40 is the high that spot had hit, right? And after that, after 6 o'clock in the evening, spot again fell down to 83.20 levels, and now it is slowly recovering. So I see that spot should be strong for the next 2 to 3 days trading sessions. It will not go weaker, although there is one important news that has come, that India for the first time today has traded oil or has bought oil from the Saudi countries using the Indian currency, Indian rupee, rather than paying for the same oil in dollars. This is one of the moves that India has taken in order to strengthen Indian rupee. But how soon it will get strengthened and what will be the impact is what we will need to see in the near future. All right. Now, let's come for the trade plan for tomorrow, friends. If at all market is open tomorrow, then let's see if this trade plan works. Otherwise, you still can keep observing this trade plan. That's what I would suggest. For that, I'll go to my favorite 1 hour chart. And friends, you have to bear with me because I really need to adjust my chart to show you some things which is very, very important. So just give me a minute while I adjust the chart over here. It sometimes is a little bit fussy, right? So let us take now a little bit of range over here. All right. So friends, one thing very important, an important level that I'll watch out for tomorrow, if the market is open, or even though if market is not open, I'll still watch out, is 83.21. If spot is above 83.21, for me, spot is in an uncharted territory. My next target above 83.21 is 83.32. Okay, if spot is above 83.21, it'll go to 83.32. Above 83.32, friends, the next target that spot will try to touch is the target that I have, which is 83.41. If spot is going above 83.41, friends, the next big move will be 83.54. And if spot is able to survive or sustain above 83.54, spot will go to this level, which is 83.76. All right. Now, many of you will have a question. Sunil, you are saying that spot is in an uncharted territory, but how can you give levels? Friends, I am giving these levels because I studied data from when spot went to 80 to 81. How much jump did it take? How did it behave? How much time it took? Similarly, 81 to 82. How much time it took? How did it jump? From 82 to 83, how did it 81 to 82, I said 82 to 83, how did it jump? Based on this 3 years of data, I'm just trying to come up with certain resistances on the top. Whether this resistance will be right or wrong, I don't know. Let's see.
At least I did some study on my own and I'm sharing it with you. Now, no harm whether you want to take or leave it, it's your choice. All right. Now, on the downside, friends, if spot trades below 83.21 for some reason, or there is a news, or if government RBI intervenes or anything, if spot goes below 83.31, the first level that spot will come down to is 83.11. Okay, below 83.11, friends, there is one more important support, which is 83.08, and below 83.08, friends, there's one more support, which is 83.034. Okay, spot can come so low, but I am very positive that at 83.034 again there will be a lot of buying that will come, or it is a demand zone. Hence it might not fall below 83. This is my personal view. And let's see if that happens, that goes in the way we have planned. So this is my trade plan, friends. I will look for a buying opportunities above 83.21, and below that it will be a little bit of selling, but it can even be buy on dips. So still I am not going to be on sell side. Even though spot falls below 83.21, I would rather do buy on dips on the lower side. All right, so this is my trade plan. Hope all of you like the video. For those people watching my video for the first time, I request you to please watch my last 2 to 3 days of analysis that I have already posted. You will get a continuation, and please do subscribe to my channel and also press the bell icon, friends, so that you get the notification of the video whenever I upload daily analysis. You'll be able to prepare yourself with some ranges analysis, and at least you'll be prepared for the trade the next day. Thank you so much, friends. Have a wonderful day. We'll see you in the markets if it is open tomorrow. Otherwise, I'll post the analysis tomorrow for 17th. Take care. Bye bye.